dignitaries and the invited guest, respected GS Raghavendra sir, and all my other faculty friends and all the participants. A very good afternoon to all of you. And I'm privileged that I have been given opportunity to introduce this topic to you. And I will try to make it as simple as possible, the presentation, as per my discussion with Ashutosh ji. And I think I'm also expected to explain in the Hindi language also, if I'm not wrong, Ashutosh ji. So Yes, I will ma'am. try Yes, ma'am. to, yes. So I will, rather than going to the legal jargon and the systematic way of defining and classifying the cyber crimes, I will try to make it simple, and I will give a lot of examples so that we can reach to the targeted audience. Let me start with what is cyber crime. Uh, um, Generally, talk about cybercrime, it is a crime involving computers and networks. So either the computer will be a tool, yeah, the computer will be a target. Using that, this crime is committed. So this includes wide range of activities. जो राघवेंद्र सर ने अभी बताया कि email access, illegal email access, then using the bank details in a fraudulent manner, taking it from your phone or any other source where you have kept your details in on the internet or on a phone which is accessible through internet. So even downloading music files to downloading music, downloading certain apps, and then through that downloaded app reaching to the device and then getting the information. All this includes the cyber crime. So there is a wide range of activities which are now covered under cyber crime. So if we categorize the cyber crime, then there are three kinds of major cyber crime. One is against people, one is against the property, and the third is against the government. So we have seen that many times there are certain messages we have been receiving that you have to fill your IT details and all, your income tax details and all. And I have seen one example wherein there was a particular website wherein the people were asked to provide the details for income tax return, and it was exactly looking like the website from income tax department. So these are certain examples where the people will be easily caught into that fraudulent website, and then they will share their personal detail. So either against people, against property, or the government, so I can easily see. Rather than making it difficult, I will just make it simple. Cyber which if we access our मोबाइल भी अगर एक्सेस करते हैं तो ये हमको मतलब बार बार हमको ये मैसेज दिखाई देता है. So what are those which are we daily frequently we see and we observe? So one is identity theft, another is psychological tricks wherein you will be given a kind of a friend request you will receive, and then you will fall prey to it. Then social media frauds, then mobile application frauds, online banking frauds, and virus attacks on personal computer or a device. These are the major crimes which we frequently see. Uh, so one is identity theft. Now, what is identity theft? Identity theft is like gaining access to your bank accounts, like you apply for loans and credit cards, or open insurance accounts, then file a tax refund. So it is like in your name, somebody else will be doing all this transaction as if he or she is doing in your name. So it is your identity will be used by that person, and that too you are not aware, you are ignorant, and then your name, your details will be used, and the benefit will be taken by someone else. So these are the Ma'am, things ma'am, covered in the identity theft. मैम सॉरी हाँ. टू इंटरवीन. मैम, जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसे थोड़ा हिंदी में भी बता दीजिएगा जी.
जी जी जी। सो जो आइडेंटिटी थेफ्ट है उसमें आपका नाम, आपका डिटेल्स यूज करके कोई और बेनिफिट ले रहा है, कोई और उसका फायदा उठा रहा है। तो जैसे मैं सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगी आपको कि हैकिंग और गेनिंग एक्सेस टू सोशल मीडिया अकाउंट्स। आपका अगर आप सपोज आप कहीं काफे में गए, आप कहीं साइबर काफे में गए, साइबर सेंटर में गए और वहां आपने ईमेल एक्सेस किया, देन यू फॉरगॉट टू लॉग आउट, आपका ईमेल वहीं रह गया है, somebody has accessed your email, आपका ईमेल किसी और ने एक्सेस किया, फिर डिटेल्स पासवर्ड एंड ऑल वो बदल दिया, फिर आपके पासवर्ड से, अब आपके आईडी से वो कहीं और आपका जो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है आपकी मेल के थ्रू वो बाकी लोगों तक पहुंचते हैं, एज इफ नो यू आर ईमेलिंग देम। सो ये जो पूरा एक है, दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर आइडेंटिटी। तो ये एक ईमेल कोई एक्सेस करता है, आपके ईमेल के थ्रू किसी और तक पहुंचता है, और आप जैसे बिहेव कर रहे हो सामने वाले को यही इंप्रेशन लगेगा कि ये मिस्टर सो एंड सो इज डूइंग ईमेल। सो दिस इज वन काइंड ऑफ ट्रिक विच वी कैन से ऑफ डूइंग आइडेंटिटी थेफ्ट। ये एक कैटेगरी है। अभी आपके बहुत सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो कहीं शेयर कर दिए, आपका जो आधार कार्ड है उसका डिटेल्स भी ईमेल में हो सकता है, तो दैट कैन आल्सो बी टेकन केयर ऑफ। इन द सेम वे क्रेडिट कार्ड स्कीमर आता है, तो क्रेडिट कार्ड कहीं पे भी आप होटल में अगर बिल पेमेंट करने के लिए देते हो, तो आपका क्रेडिट कार्ड का इम्पोर्टेंट डिटेल्स होता है, उसमें जो एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है वो, और सीवीवी नंबर होता है। तो देर आर मशीन अवेलेबल, जो मशीन आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वो आपका क्रेडिट कार्ड का मशीन है, और उसमें ये बट ये इमीडिएटली इट गेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर स्कीमिंग हो जाएगा, एंड वो बंदा आपका क्रेडिट कार्ड, आपके क्रेडिट कार्ड सीवीवी लेके क्रेडिट कार्ड यूज करेगा। आप जब बिल रिसीव करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये ट्रांजेक्शन मैंने तो किया ही नहीं है, बट ये सारा मेरे नाम से ट्रांजेक्शन हुआ है। सो ये सब मैटर में वेन एवर आप अगर होटल में जाओ कहीं, वेन एवर यू गो टू होटल और वेन एवर यू गो समवेयर, डोंट गिव योर क्रेडिट कार्ड टू समवन, कीप योर क्रेडिट कार्ड विथ यू। आप खुद ही अपना ट्रांजेक्शन करो। आप होटल बॉय को या किसी को भी अपना कार्ड मत दे दो कि वो ट्रांजेक्शन करके लेके आए, और फिर आप पिन है, पास सीवीवी नंबर है, दैट शुड नॉट बी शेयर्ड। अगर वो शेयर कर दिया तो बहुत इजीली वो आपका आइडेंटिटी थेफ्ट करके आपका डिटेल्स यूज करेंगे। मेनी टाइम्स इट हैपेंस दैट फोटो आईडी, आपका जो प्रूफ देते हो, जैसे मैंने अप्लाई किया मोबाइल नंबर के लिए, या तो मैंने बैंक लोन के लिए अप्लाई किया, जनरली देयर इज अ हैबिट ऑफ नो गिविंग आवर प्रूफ्स विदाउट साइनिंग, और फॉर व्हाट पर्पस वी हैव बीन साइनिंग। तो हमारा जो प्रूफ हम देते हैं उसमें कभी हम ये हार्डली ऐसा हमको याद आता है लिखे कि ये प्रूफ हम ये पर्पस के लिए दे रहे हैं। तो जनरली इन सच काइंड ऑफ केसेस दैट आइडेंटिटी प्रूफ मे बी यूज्ड बाय समवन एल्स। कभी आप ई कॉपी भी दे देते हो, तो देन देयर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर कि जिसके थ्रू वो आपका नाम या वो चेंज करके वो आधार कार्ड, आपके आधार कार्ड या जैसे वो यूज करके कोई और भी आपके नाम पे लोन ले सकता है। सो ऐसा बहुत बार होता है। सो व्हेन यू आर गिविंग योर फोटो आईडी और सच काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन टू समवन, प्लीज एंश्योर कि उस पे आप पूरा फॉर व्हाट पर्पस यू आर टेकिंग, कौन से काम के लिए आप दे रहे हो वो भी लिखना मत भूले, और वो थोड़ा सतर्क तरीके से देना चाहिए। So these are one kind of category of cybercrime. Another is psychological trick, wherein attackers play with minds of the user to trap the user into lucrative offers. जैसे बहुत अच्छी अच्छी आपको ऑफर आएगी, एंड देन देर विल बी अ वेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विल बी, आपको बोलेंगे कि आपका पान डिटेल, बहुत अच्छी ऑफर देखेगी, आप पूरा डिटेल भर के आपका पर्सनल इंफॉर्म करोगे, एंड देन यूजिंग दैट पर्सनल इंफॉर्मेशन और टाइप के भी आप पे मतलब आपको
बहुत सारा आपका आइडेंटिफिकेशन, आपका बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके, और there are different kinds of ways in which your information will be used and your details will be used in such a manner that somebody else will get the benefit. बहुत बार आपको email आता है, phishing emails आते हैं, and there you will be asked to provide your details. Then it will be from, suppose if you have if you are applying for a job, or if you are willing to apply for a job, तो बहुत सारी जगह से आपको ईमेल आता है कि भाई दिस कंपनी इज देयर, दिस वैकेंसीज आर देयर, fill your details, this that. Now there are very sensitive information regarding bank accounts and all that also that will be also asked in that form, and people are easily giving. So those bank details accounts, no, we have to be very careful when we are giving. बहुत सारी बार जो वेबसाइट हम यूज करते हैं उसमें HTTP होता है, HTTP एस नहीं होता है, तो लोगों को पता नहीं है कि एस कौन सा, तो एस सजेस्ट सिक्योर्ड। सो वो भी एक है कि विदाउट सीइंग इट, जब वेबसाइट हम यूज करते हैं और बहुत सारी वेबसाइट में हमसे इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, तो दैट वी आर गिविंग इट फ्रीली विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये एक तरीका है कि आपको साइकोलॉजिकल ट्रीट करते हैं कि आपको, यू आर विलिंग फॉर अ जॉब, then this kind of email will easily you will be get attracted and you will give your detail. In the same way, lottery, जैसे you are very much interested in a lottery and all, तो अगर लॉटरी के लिए आप जा रहे हो तो बहुत सारी ऐसी भी आपको इंफॉर्मेशन आपने, और देर इज in a computer or in a mobile, whatever device you have been using, अगर आप यूज करते हो और एक बार सर्च करो, तो then automatically that kind of information will be provided. This is something automatically your data will go and accordingly you will get attractive offer. तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको मैसेज आता है टेलीफोन से या आपके ईमेल से, आई मीन टू से SMS से या व्हाट्सएप से कभी कभी, और ईमेल से कि यू पे दिस मच अमाउंट एंड बाकी का अमाउंट आपको दिया जाएगा। अगर लॉटरी आप ले रहे हो तो लॉटरी आपको इनाम लगा है, तो ये आप पहले 30,000 भर दो, फिर बाकी का आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। गिव योर बैंक डिटेल्स, वी विल शेयर यू द अमाउंट। समटाइम्स ऐसा होता है कि दे से कि इफ यू वांट टू परचेज दिस टेलीविजन, टेलीविजन है ऑनलाइन, आपको गिफ्ट लगा है, तो ऑनलाइन आपको गिफ्ट लगा है, आप वो गिफ्ट में आपको सिर्फ 25,000 पे करना है, बाकी का अमाउंट आपको पे नहीं करना है। दिस अमाउंट विल बी रिटर्न टू यू आफ्टर यू विल रिसीव अ गिफ्ट। तो आपको 1 लाख का टीवी आपको सिर्फ 25,000 में मिल रहा है। नाउ दिस इज समथिंग, यू विल लूज योर 25,000 because you are not going to get the TV or you are not going to get anything. ये सिर्फ आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेके आपको मतलब आपको फायदा उठाते हैं। तो SMS से बहुत बार ऐसा होता है, वेब लिंक होती है जिसमें आपको वेब लिंक कभी कभी शेयर करेंगे, कोई वेबसाइट आपसे शेयर करेंगे, फिर आपको बोलेंगे कि वेबसाइट पे क्लिक करो। अगर वो आप वेबसाइट पे क्लिक करते हो तो देर विल बी अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, either you will end up with some virus attack or something like that, when your device will be affected, आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन चली जाएगी, सारी इंफॉर्मेशन जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन भी आपने वो डिवाइस में रखा है वो भी अफेक्ट। So these are the different kinds of techniques to use this device, SMS and all, and to get the people easily caught into it. क्रेडिट कार्ड बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड का ये बिल है जो आपने नहीं किया, अभी भी बाकी है, शेयर योर डिटेल्स, नहीं तो आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा। तो ये सारी साइकोलॉजिकल ट्रिक है। दो यू नो दैट यू हैव पेड द क्रेडिट कार्ड बिल एंड इट इज फॉल्स, देन यू विल बी आउट ऑफ द डेंजर। बट इफ यू आर नॉट अवेयर, अगर आपको पता नहीं है, इफ यू डू इट, then you will start no panicking, and then you will provide all the details, then फिर से आप पेमेंट कर दोगे, because the second time payment that you are making, that will not go to the correct the person or to correct institute or the organization, but it will go to someone else. So ये सारी एक psychological trick है। Next is, I'll not take much time, I will stick to the time, only a few minutes I'll be needing. So social media frauds. Social media frauds has become, now social media has become integral part of our lives. So wherever suppose if I am traveling somewhere, I will just put all the information on Facebook, then all my family photographs will be on Facebook.
and many times we share very important details on Facebook or other social media, and from there people will start following us. तो हमको एक फॉलो करते हैं वो लोग, एंड वो फॉलो करते करते हमको नहीं पता है कि हम कौन हमको फॉलो कर रहे हैं, एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारी हम लीक कर रहे हैं. जैसे एक सिंपैथी फ्रॉड होता है कि द अटैकर बिकम्स फ्रेंड विद द विक्टिम on social media, or the attacker gains trust by frequent interactions, and the attacker later extracts money. Like suppose we have become so much friend that no, सामने वाला बोलेगा कि हमको इतना, we are in need of this much amount, can you transfer it? And the friendship has been developed to such an extent that easily we will do it. So many times it has happened also in past through Facebook. Many such kind of cyber crimes have been committed. Then another is a romance fraud. So you a friend request will be received. You will be entering into a friendship, and then that friendship will go to that extent कि फिर आपको बाहर भी जाओगे उनके साथ, घूमोगे, कहीं पे भी जाओगे, those videos, those photographs will be recorded and it will be shared on social media. That threat will be given to you and handsome amount will be received from you. So this may be a financial loss, loss of your reputation also. So these are some of the things where in a like making you friend, and a kind of a tricks, romance tricks that I can say, that will be applied, and the victim, the person will be caught in it. Then cyber stalking, that is another example. And then cyber bullying, like you will be constantly threatened that this information will be kept on the social media and all, and those information are very harmful or negative looking to your reputation. तो ये सब एक तरीका है जो आप, if there is any such video or anything, is like even not by sharing the information, but in any way recording your video and then putting it on social media, this kind of threatening things are also part of the cybercrime. Then mobile application fraud. Mobile application, these are the common frauds, these are the common crimes I'm describing. So cyber attacks using infected mobile applications, people become habitual users of certain mobile applications. And as a result, they ignore security warnings. Many times we receive security warnings, but we ignore. And we kept on using the mobile. Like e-gaming has become very popular nowadays. Many apps we download, हम बहुत सारे apps download कर देते हैं, और all kinds of things we agree, हम agree कर देते हैं, terms and conditions, without seeing the terms and conditions हम agree कर देते हैं. बहुत सारे apps में, apps के through मोबाइल पे भी अटैक हो सकता है. So this kind of crimes also comes under the attack on your device or attack on your computer. So mobile applications के through the Trojan virus है, Trojan can get access to your messages, and then OTP, camera, contacts, all will be extracted, and then, or even if whatever videos you have kept, maybe proper videos or obscene videos or whatever moments you have captured in your device, that will be also going to someone else. So this is another technique of, through downloading of app, you may be become a victim of it. Another important thing that even Raghavendra sir has explained, that is online banking fraud. That has become मैम very आपके पास common. में, Now, मैम सॉरी टू इंटरवीन, आपके पास में 2 मिनट और होगा, अपना सम अप करिएगा. sir, सॉरी मैम, इतना मैं बड़ा, इतने उसमें बड़े 2 मिनट, टॉपिक को हम ना आपसे ना इतने ना, कम समय में, जी 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 जी. नहीं नहीं, I cover it in this. Banking fraud has again become very prevalent. So अभी हम क्या करें, सारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं थ्रू मोबाइल और थ्रू नेट बैंकिंग, थ्रू कंप्यूटर, बट वी डू इट नेट बैंकिंग. सो बहुत सारा ये जो ट्रांजेक्शन में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, एंड बहुत बार ऐसा होता है कि फिर वी बिकम विक्टिम ऑफ फेक वेबसाइट, और समवेयर वी शेयर अवर इंफॉर्मेशन, या तो फिर वो वही कंप्यूटर में हमारी इंफॉर्मेशन भी रहती है, वहां और कोई वायरस का अटैक हो जाता है तो भी हमारा इंफॉर्मेशन शेयर हो जाता है. So digital payment applications related attack, many times we have seen that digital payments have become very common. So बहुत बार ऐसा होता है कि हम विदाउट सीइंग प्रॉपर डिटेल्स हम डिजिटल ट्रांजेक्शन कर देते हैं,
और वो डिजिटल ट्रांजेक्शन में कभी आपका बैंक अकाउंट भी हैक हो जाता है और बहुत सारा प्रॉब्लम होता है. सो हैकिंग ऑफ मल्टीपल अकाउंट्स ड्यू टू सेम पासवर्ड, मल्टीपल अकाउंट रखते हो और उसमें एक ही पासवर्ड रखते हो, तो ये विक्टिम आप ज्यादा हो सकते हो. So, and the last one that I would like to cover is virus attack on personal computers and laptops. So, as I said, that many times we download certain things without checking the consequences or a proper whether they are proper website or not. We download many apps, many things, and through that, the virus will enter into your computer and the services will be disabled. So, to that extent, the crimes are committed. And many times by downloading the files from untrusted websites, many times by installation of malicious software, many times we download software without saying if it is available in free में available है तो हम बहुत सारे software download कर देते हैं. So बहुत सारा and that will end up with you can say attack on your device or your information will be shared. So these are few examples. Rather than using the technical jargon and classifying them into technical legal jargon, I just made it simple so that these are the frequent things which we are facing in our day-to-day transaction or using the app. हम कभी कंप्यूटर यूज करते हैं या कभी मोबाइल यूज करते हैं. दीज आर द थिंग्स हम जनरली ये इसका विक्टिम हम बहुत ज्यादा बनते हैं. So these are the things I have shared with you, and I hope that I have reached to the targeted audience. I have tried to be as simple as possible and using the language also in both the mediums. But if there is anything, Ashutosh ji, let me know. I will share my PPT also with you, which I have prepared, so it will be useful to the targeted audience. Thank you so much once again for giving me this opportunity. Thank you.